I am starting my explanation again because I don't have started recording. We are going to start center of gravity. We have divided this topic into two parts, part number 1 and part number 2. Ideally, we can't divide it is in a part 1 and part 2, but I have divided for simplicity. So in part number 1, we are going to discuss concept of the center of gravity. What is center of gravity? Basic equations for center of gravity for various shapes, say one-dimensional body, two-dimensional body, or three-dimensional body, and its numerical problem. Okay, this topic will be covered today. And part number 2, derivation of the center of gravity for various shape. ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो यहाँ पे हमने बेसिक इक्वेशन हम कंसीडर करने वाले हैं, उसका डेरिवेशन हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे. इज इट क्लियर? प्लीज कंफर्म मी चैट बॉक्स. इज इट क्लियर? प्लीज कंफर्म मी चैट बॉक्स. Okay, I want answer from all the 19 students. Okay, I hope it is clear to all of you. Fine. Sure. Fantastic. Okay, so let me start center of gravity. Is my screen is visible to all of you? Is my screen is visible to all of you? Please confirm. Okay, fine. Now, let me discuss what is center of gravity. We have remember few terminologies. First is the center of gravity, second is the centroid, third is the center of mass, and then we have to going to discuss difference between center of gravity and centroid. Then what is the axis of symmetry? Now, this concept of center of gravity, it is a part of the derivation. Okay, so this will be discussed later on. ठीक है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ये लेक्चर में डिस्कस नहीं कर रहे हैं. So what is center of gravity? Center of gravity is a concept wherein it is assumed that weight of a given body is concentrated at a point and the entire weight of body acts through this point. The coordinate of these points are coordinate of center of gravity and concept of center of gravity important, which make structure stick. Again, I will repeat this definition. What is the definition of center of gravity? Center of gravity is a concept wherein it is assumed that weight of given body is concentrated at a point and the entire weight of the body acts through this point. Is it clear, students? Please confirm me. And जो जिस पॉइंट पे सेंटर, जिस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट बोल रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेट को हम कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी. Is it clear or not? Please confirm me. Definition में कोई क्वेश्चन है? Students, please make a lecture interactive. Is it clear or not? Please confirm me. Okay. You people don't have any mic rights. You are unable to unmute yourself. So please give me answer in chat box. Centroid. It is defined as a point about which entire line area or volume of body assumed to be a concentrate. Now, just compare the definition of center of gravity and centroid. In the case of center of gravity, we are going to assume, we are going to consider weight of the body or mass of the body. Is it okay? In a case of center of gravity, we are going to consider weight of body or mass of body. But in case of the centroid, we are considering the line area or volume. So can I say that we are going to consider geometrical representation? Yes or no? Yes or no? It is important. Huh?
Please confirm in chat box. Just read a definition carefully. Definition વાંચવા ખાતર નથી વાંચવાનું. Just try to understand this definition. Center of gravity is a concept wherein it is assumed that weight of body is concentrated at point. The entire weight of body acts through this point. Whereas in a case of centroid, point about which entire line, area, or volume of body is assumed to be a concentrated. Okay? Chaliye. What is center of mass? It is defined as a point about which entire mass of body is assumed to be a concentrated. If body is homogeneous and isotropic in nature, the center of gravity and center of mass would be a same point. Keep in mind. If your body is homogeneous and isotropic, homogeneous यानी कि एक ही मटेरियल का फॉर्म हुआ है, isotropic यानी कि all three direction having the same property, either straight, strain, जो भी property है x, y, z तीनों डायरेक्शन में सेम रहेगा, उसको हम isotropic बोलते हैं. So such kind for such kind of body we can consider center of gravity and center of mass would be at the same point. Is it clear? Please confirm me. Is it clear? This concept is clear. Students, please make lecture interactive. If you are attending the lecture for only attendance, please leave the room. ठीक है, मैं आपको recording भेज दूंगा, देख लेना. But please give me answer in chat box. To make a lecture smoothly, I have not giving anyone to rights to unmute yourself. ठीक है, लेकिन after some time or after end of some explanation, I will allow to you ask me question. ठीक है, so please make lecture interactive. Fine. Engineer over a year have used this concept of center of gravity for making a stable structure. उसके examples pyramid, Taj Mahal, or machineries like easy maneuver vehicle, aeroplanes, उसका example है. And all are the stable while performing. Is it clear? I hope all of you are able to understand. If we are driving the car or if you are driving the two-wheeler, your machineries are under the stable condition due to the center of gravity concept. Okay. So this is your x and y coordinate, and suppose this is your body. Okay, suppose this is your body having a random shape, and suppose this point is your center of gravity. So from center of this particular body, we are going to reference y-axis, perpendicular y direction, and that distance is nothing but your x distance. And from center of that body, we are going to x-axis, and this perpendicular distance is nothing but your y coordinate. Is it clear or not? Please confirm me. Is it clear or not? This is basically we are going to say it is a x bar and this is a y bar. Okay. Now one more announcement to all the students. I am not going to repeat this topic in offline. Keep in mind, if you are attending the offline lectures, I am not going to repeat this topic in offline lectures. And next topic in offline lecture may be a continuity of this topic. So you must know this particular concept. So keep in mind, whether you are going to attending lecture live or recording, you must have to come. You must have to getting information about this topic. I am not supposed to going to repeat this particular topic. Keep in mind. Chali. I hope it is clear to all of you. Actually, here x bar and y bar, I have not mentioned bar, but you have to mention x bar and y bar. Okay? Chalo. Now, it is important question. Difference between centroid and center of gravity. What is centroid and center of gravity? Point about which entire length, area, or volume to be concentrated. In case of the center of gravity, point about which entire weight of body is supposed to be a constant. Now, centroid is a distribution of length, area, and volume.
That means it is a geometrical distribution. We are not going to consider any weight, any mass, any weight and any mass. But center of gravity, we can say it is a distribution of mass used to represent center of line, arc, rectangle, and triangle. It is used to represent center of solid bodies like cube, cone. So this is the basic difference for center of gravity. Now we are going to use some equations for calculating centroid for one dimensional. Now basically for a one dimensional element. Now again, here your difference is complete. Huh? Here your difference is complete. At this point, your difference is complete. इतना ही difference है. Is it clear or not? Please confirm me. 3 point not difference क्योंकि વધારે difference कर. I hope it is clear to all of you. Is it clear? Now we have to consider two kind of body for our numerical problems. One is a one dimensional element and another is a two dimensional element. ठीक है, आपको ये इक्वेशन याद रखना. कैसे इक्वेशन ये डिराइव हो रहा है, we will discuss later on. Don't worry, we will discuss later on. ठीक है, in next week, in next Saturday, supposed to we are going to conduct one more extra lecture. In that lecture, we are going to derive these equations. ठीक है, so x bar equal to summation li xi divided by summation li, and y bar equal to summation li yi divided by summation li. Please note down this equation. Please note down in equation in your page. It is required, but it will be helpful for further calculations. For one dimensional element, x bar equal to summation xi li divided by summation li. Now, what is xi? As we have discussed, suppose this is your x-axis and this is your y-axis. This is your body. Now, I have considered random shape of body. Now, based on our discussion, now, in our case, we are going to calculate centroid. ठीक है, हम weight और mass consider नहीं कर रहे. We are going to consider it on a centroid. Suppose ये बॉडी का सेंट्रोइड पॉइंट यहाँ पे है, तो ये सेंट्रोइड पॉइंट से रेफरेंस वाई एक्सिस का जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज योर एक्स बार. इज इट क्लियर? एंड दिस centroid point to reference x axis. Keep in mind, I have used the word reference x and reference y. Now, what is the reference x? What is the reference y? We will discuss in numerical problem. So, but you have to keep in mind, we are going to choose a reference point. Okay? This distance is your y bar. I hope it is clear to all of you what is this x bar and what is this y bar. Is it clear or not? Is it clear or not? Please confirm it. If you have any question, you can ask me in chat. यहाँ तक कोई question है? Is it clear or not? There are 20 free student in group. No one give me a reply. I want answer from all the students. Fine, chaliye, fair enough. So this is something about centroid. Now, if we are going to consider, now question is that what is LIXI? Suppose now consider this is your 1D element. Suppose this is your 1D element. Suppose I am dividing this element into n number of parts. This element into n number of parts. So we have an n number of elements. Yes or no? We have an n number of elements. I am drawing this sketch again here. Okay. This is your y-axis. This is your x-axis. Say this is your part number 1. Now I am going to consider individual part.
For this particular part number 1, having a different center of gravity, yes or no, for reference X and reference Y. Similarly, say this is your part number 2. For this part number 2, having a again separate center of gravity, yes or no? Everybody with me? Say this is your X1, this is your X1, this is your Y1. Similarly, this is your X2, this is your Y2. I hope all of you are able to understand this concept. ये आपका पूरा बॉडी है, मैंने पूरा बॉडी कंसीडर किया है, उसका पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसीडर किया है. But if I am going to divide this body in n number of parts, I am having a n number of center of gravity points. Yes or no? I have separate center of gravity points for each and every elements. Yes or no? That's the reason we are considering summation Li xi divided by summation Li. What is Li? It is the length of the element. If you are going to consider, part number 1, you have to consider length of the part number 1 and center of gravity of part number 1. If you are going to consider part number 2, you have to consider L2, X2. Is it clear or not? Please confirm. इतना clear है? Okay, fine. चलिए. Now, for 2D elements, our equation is more or like same, but instant summation L. Okay, what is summation L? Summation L is nothing but if you have a element, and in that particular element, if you have 3 elements, 1, 2, and 3. Now here I am drawing just area like body having the area like elements. Okay. Now if just consider this body as a 1D element. Actually 1D नहीं है, लेकिन 1D consider कर दो. For an example, this is your part number 1. उसका कुछ length होगा. For an example, consider this is your part number 2. उसका कुछ length होगा. For an example, this is your part number 3. उसका कुछ length होगा. For an example, this is your part number 4. उसका कुछ length होगा. That means we have 4 different lengths: L1, L2, L3, L4. Okay. So what is summation L? Summation of all the lengths. Is it clear or not? Please confirm me. Is it clear? Fine. चलिए. Now next, for 2D element, instead of length, we are going to consider area. Is it clear? What is your x bar? Summation ai xi divided by summation ai. What is your y bar? Summation ai yi divided by summation ai. I hope it is clear to all. Clear है? For area element, we are going to consider, sorry, for 2D element, we are going to consider 3D. Now, just try to understand. If I am consider 3D element, we have volume. It's L, B, and H. Yes or no? L, B, H की जगह मैं L, B, T लिख रहा हूँ. Now, if I am considering the 2D element, for 2D element, can I say it is the area element? Can I say it is the area element, and 3D element is a volume element, volume part? Now, if I am considering 2D element, in that case, can I say that your thickness is negligible? Yes or no? Your thickness is negligible. Yes or no? For 2D element, just consider like this block. Your thickness is negligible. Your thickness is negligible. Yes or no? For 2D element. So for 2D element, can I ignore this thickness wala term? Yes or no? Please confirm me, students. Please confirm me, students. So I have an equation L into B. What is L into B? That is your area. That's the reason for 2D element we are considering area. Yes or no? Please confirm me. I hope all of you are getting the point. Why in 1D, sorry, I am not shifting to 1D element, I am shifting to 2D element only. Why in 2D element we are considering area? This reason. Now, how to derive this equation? We are derive this equation. Don't worry. Okay, we are derive this equation in next week. Don't worry. Okay, chaliye. Now, if I am considering one further
if I am considering 1D element, in that case, can I say that my width is also negligible? Just consider wire. Wire को consider कर दीजिए. Wire element. Its diameter. Now, say visualize that wire is a rectangle in shape. Now, just visualize that with respect to your length, your width and depth is very small. Or if you're having a circular kind of the element, if you're having a circular kind element, your diameter is very small as compared to your length. Yes or no? So in that case, can I say that I have neglect thickness as well as width? That's the reason we are considering length. I hope it is clear to all of you. Please confirm me, students. Clear enough? Clear enough? Please confirm me. Okay. I hope it is clear to all of you. Sure. Now, next term is the axis of symmetry. What is axis of symmetry? It is defined as a point about which, if given figure is folded, then the one portion is exactly superimposed over other portion. Now, simple example: if I am considering the circle, its center is somewhat like that here. Say this is your reference x-axis, this is your reference y-axis. If I am fold this body either from this axis or from this axis, can I say that we have entirely mirror image? Yes or no? Mirror image? Yes or no? Everybody with me? You are right, all. Can I say I have a mirror image? Yes or no? Please confirm me. What is axis of symmetry? If you are able to getting a mirror image about the axis, you can say that your body should be a your axis should be a your body having the axis of symmetry. Similarly, if I am hold this body about this axis, again can I say I will get a axis of symmetry or symmetrical body? Yes or no? Please confirm me. Similarly, for rectangular body, if I am considering this now all of you are knowing that center of rectangle at its center. So from this centroid axis, if I am holding this body about y-axis, this is your y-axis. Again, you are able to get a symmetrical condition. Yes or no? Please confirm me. थोड़ा विजुलाइज कीजिए. आपका नोटबुक का पेज ले लीजिए और मिडल में से फोल्ड कीजिए. You will get an exact symmetrical body. Yes or no? Yes or no? Please confirm me. Monday. ठीक है. Just a minute, student. Just a minute. Okay. Is my voice is clear? Please confirm me, students.
my voice is clear? Please confirm. Okay, fine. चलिए. So I hope all of you are able to understand concept of symmetry. ठीक है? चलिए. So few examples. Circle having the infinite axis of symmetry. Again, if you are considering this conical shape, so can I say this is the axis of symmetry? Yes or no? थोड़ा आपको विजुलाइज करना, ठीक है? चलिए. नाउ जो स्टूडेंट लेट ज्वाइन हुआ है उसके लिए आप लोग ये फॉर्मूला नोट डाउन करके रखिए, उसका जरूरत पड़ेगा अपने को. फॉर 1D एलिमेंट x bar equals to summation li xi divided by summation li, y bar equal to summation li yi divided by summation li, and for 2D element x bar equal to summation ai xi divided by summation ai, and y bar equal to summation ai xi divided by summation. Please note down this two formula. I am giving the 1 or 2 minutes to all of you. Please note down it. We are planning to complete numerical example of for 1D element and 2D element today. We are going to complete example. both element हम complete कर रहे हैं. नोट डाउन हो चुका है? प्लीज कंफर्म. नोट डाउन हो चुका है? प्लीज कंफर्म. Okay, I am closing this file because now onwards there is no need of this particular file. Now is my screen is visible? Please confirm me. Is my screen is visible? Please confirm. Right. Okay, no problem. We have discussed already concept of center of gravity. We have discussed this difference also. Now you have to prepare this particular table. ठीक है? आपको ये टेबल बनाना. आप ये टेबल नोट डाउन कीजिए आपके नोटबुक, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी. जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब इसका जरूरत पड़ेगा. ठीक है? फर्स्ट ज्योमेट्रिकल शेप कौन सा है? ज्योमेट्रिकल शेप. नाउ दिस पर्टिकुलर formulas for one dimensional element. ठीक है? We are going to discuss for one dimensional element. Is it clear or not? Please confirm. Don't mix up with 2D. This is for 1D only. ठीक है? If you are having a geometrical shape like if you have a geometrical shape like 1D element, ठीक है? और उसमें भी स्पेसिफाई है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल और स्ट्रेट वर्टिकल लाइन. इज इट क्लियर? कौन सा शेप है? क्लियर है? 1D एलिमेंट में हम पार्ट नंबर 1 कंसीडर कर रहे हैं. इफ यू हैव अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल और स्ट्रेट वर्टिकल. स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसी लाइन, स्ट्रेट वर्टिकल यानी कि ऐसी लाइन, दोनों में से कोई भी शेप. ठीक है? आपका लेंथ. नाउ व्हाट इज अवर इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर x बार? summation li xi divided by summation li. yes or no? everybody with me? हमने ऐसा कुछ नोट डाउन किया है? प्लीज कंफर्म मी. ऐसा कुछ डिस्कस किया है ना? चलो, तो इसमें हमको क्या चाहिए? लेंथ चाहिए. वी रिक्वायर लेंथ. दैट्स द रीजन वी आर कंसीडरिंग द लेंथ ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर. नाउ दिस इज योर सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द लेंथ. सो उसका लेंथ कितना होगा? उसका लेंथ कितना ही होगा? L. For straight horizontal line your length will be L. Is it clear or not? Please confirm. If you have any doubt, note down in your
notebook, I will giving all of you a mic price. Don't worry. Okay. After few time, I am giving to all of you mic price. Not down. Is it clear or not? Please confirm me. Now, what is your X bar and Y bar for this kind of the shape? Depending on orientation of the line, your X bar and Y bar is depend on your orientation of the line. ठीक है, आपका orientation कौन सा है उसके ऊपर depend रहेगा. If line is parallel to X axis, now don't worry, I am able to I am giving the examples. Don't worry. Suppose this is your X and Y axis. ठीक है, आपका लाइन ऐसा है और दूसरा लाइन ऐसा है और तीसरा लाइन ऐसा है. ऐसा शेप आपको दिया हुआ है ज्योमेट्री में. ठीक है, सपोज ये लाइन का लेंथ है 10 मीटर, ये लाइन का लेंथ है 5 मीटर और ये लाइन का लेंथ दिया है अगेन 5 मीटर. ठीक है, ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को लाइन ए बोल रहा हूँ, वर्टिकल लाइन को मैं लाइन बी बोल रहा हूँ और इंक्लाइन लाइन को मैं लाइन सी बोल रहा हूँ. इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज कंफर्म स्टूडेंट्स. इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? प्लीज कंफर्म. चलिए, डोंट कंफ्यूज. If you have any question related to this topic, you can type in chat box. I will try to explain it. Now, just read this sentence very carefully. Depending on orientation of line, आपका X bar और Y bar किसके ऊपर depend है? If I am considering straight horizontal line or vertical line, that means I am going to consider case number A and case number B. Everybody with me? मैं case A and case B consider कर रहा हूँ. Your line number A, which is parallel to X axis, yes or no? Everybody with me? Your line number A is which is parallel to X axis. Now I am plotting again, and I am plotting only line A. Yes or no? Please confirm. Is it clear? इतना क्लियर है? लाइन नंबर ए का लेंथ आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल है. कितना है? टाइप इन चैट बॉक्स. चलिए, आप लाइन नंबर ए का लेंथ देखिए, कितना लेंथ है? No, I want only length. Docs, please give me answer of what question I have asked. कितना लेंथ दिया है? Yes, good. Good. Okay. डेटा में दिया हुआ है लाइन नंबर ए का लेंथ 10 मीटर है. I hope all of you are clear. लाइन नंबर ए का लेंथ यानी कि आपका लेंथ सीधे सीधा मिल गया 10 मीटर. Yes or no? Yes or no? Please confirm me. Is it clear? Fine. चलिए. Now, as we have discussed, this is a simple line. तो उसका सेंटर उसके सेंटर पे रहेगा. Everybody with me? लाइन के सेंटर में रहेगा. ओरिएंटेशन कौन सा है? X डायरेक्शन में है. तो now this is your Y bar. Everybody with me? And this, ये डिस्टेंस आपका X बार होगा. ये डिस्टेंस आपका X बार होगा. Yes or no? Please confirm me. Clear है? चलो, सपोज ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है. अभी ऐसा एज्यूम कर लो ये डिस्टेंस आपको 5 मीटर दिया हुआ है. ठीक है, तो नाउ व्हाट इज योर दिस डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस 10 मीटर होगा. टोटल डिस्टेंस 10 मीटर होगा. ये 5 मीटर प्लस 5 मीटर 10 मीटर. एवरीबॉडी विथ मी? ओके, सो नाउ इन दिस केस, नाउ जस्ट सी योर एलिमेंट इन विच डायरेक्शन, X or Y? टेल मी. Your element in which direction, X or Y? Line A is in which direction? X direction में या Y direction में? Please students, give me answer in chat box. ओके, आपका लाइन नंबर है X डायरेक्शन. सो नाउ दिस इज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये सेंटर से मेरे को रेफरेंस X और रेफरेंस Y पे जाना है. So now just think that if your line in X direction, your Y distance will be get directly, yes or no? Directly મળી જાય છે ને આપણને? Yes or no?
એમાં મેં કોઈ સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી કન્સેપ્ટ એપ્લાય કર્યો નથી. I am considering line number A, line number A, this that is directly 10 meter mass. But if I am considering the line number A, which is lies in a x direction, now just see here. Suppose this distance, say this length is a 1 meter. So in that case, what is your x bar? आपको ये लाइन के सेंटर से पहले यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, लाइन तक पहुंचना पड़ेगा. दैट इज नथिंग बट L/2 as we have discussed. देखिए यहाँ पे लिखा है x bar equal to, if line is parallel to x axis, your center of length equals to L, x bar equal to nothing but L/2. Now don't confuse y bar equal to 0. I will giving this example also. ठीक है, I am giving this example also. Center of length जितना होगा x bar, तो कितना है center of length? L/2 equals to 10/2, that is equals to 5. Yes or no? Everybody with me? Everybody with me? चलिए फाइन. बट मैंने क्या बोला कंसेप्ट में, व्हाट इज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी? ज्योमेट्री के सेंटर से और लाइन के सेंटर से मेरे को रेफरेंस y एक्सिस पर जाना है. तो मेरा एक्चुअली x बार यानी कि x1 होगा. इस केस में x1 होगा. xi हम कंसीडर करते थे. x1 कितना होगा? 1 मीटर प्लस 10/2. यस और नो? Everybody with me, please confirm me. 1 meter plus 10/2. Is it clear or not? x1 बोलूं छू. ठीक है, I hope it is clear to all of you. Is it clear or any question? Okay, चलिए fine. Now we are going to discuss line number B. Before going to line number B, let me discuss line number A in some different perspective. And in that case I am explaining to y bar. 0 क्यों लिखा है वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. Now let me assume we have a same geometry, but थोड़ी देर के लिए ऐसा भूल जाइए कि ये लाइन यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है ये लाइन यहाँ पे हो. यस और नो? ऐसा भी हो सकता है ये लाइन यहाँ पे हो. यस और नो? प्लीज कंफर्म मी. सेकंड केस सोचिए. ठीक है, सो नाउ again concept is remains same. What is the orientation of line? Or geometry? X direction. Yes or no? From center you are able to calculate this distance, that is your x1. Yes or no? But your reference x axis and your line element both are on same location. Yes or no? Both are on same location. Yes or no? Students, please be active. So in this case, can I say you don't have a y? So can I say y equal to 0 in this case? ये आपको याद नहीं रखना है. ये केस मैंने यहाँ पे सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए y बार 0 लिखा है, लेकिन हर एक केस में y बार 0 नहीं आएगा. मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे. ये टेबल लिख रहे हो तो ऐसा एग्जांपल में डायरेक्टली ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना है, आपको कंसेप्ट देखना है. बट x कितना होगा? as we have discussed 1 plus 10/2. I hope it is clear to all. ठीक है, any question till? If you have any question you can ask me chat box. I am removing this geometry. Now I am removing this geometry. चलिए, now we are going to consider line number B. Okay, सेम प्रोसीजर. आपका लाइन भी यहाँ पे है, लाइन का लेंथ 5 मीटर है, आपको लेंथ मिल गया. नाउ दिस इज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी. यस और नो? फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लाइन to reference y axis, this is your x2. Yes or no? And from this center of gravity to reference x axis, this is your y2. Yes or no? डेटा में हमको ये डिस्टेंस दिया हुआ है. ये पूरा डिस्टेंस 11 मीटर है.
ये पूरा डिस्टेंस 11 मीटर है और ये पूरा डिस्टेंस 5 मीटर है। हमारा लाइन कौन सा है, मैं जो राउंड कर रहा हूं वो हमारा ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? सो मेरा लेंथ तो मिल गया 5 मीटर। व्हाट इज माय x2? व्हाट इज माय x2? सीधे सीधा 11 मिल जाएगा। एवरीबॉडी विथ मी। व्हाट इज माय y2? लेंथ का हाफ करना पड़ेगा बिकॉज योर एलिमेंट इन y डायरेक्शन, यानी कि 5/2। 5/2 करने से यहां तक ही पहुंचा हूं, लेकिन मेरा रेफरेंस एक्सिस कौन सा है, ये, तो +5 करना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज कंफर्म मी। इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज कंफर्म मी स्टूडेंट्स। इज देयर एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। चलिए, फैंटास्टिक। नाउ लेट वी अंडरस्टैंड x बार इक्वल टू 0। सेंटर ऑफ लेंथ ये तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया 5/2। नाउ सपोज योर लाइन इज लोकेटेड एट दिस लोकेशन। थोड़ी देर के लिए ऐसा सोच लो कि आपका लाइन यहाँ पे है, तो कैन आई से दैट योर x इक्वल टू 0? यस और नो? Because you are not able to find out center of gravity in x direction or centroid in x direction. ठीक है? So I hope all of you are clear about this. I hope all of you are clear about this. चलिए, फैंटास्टिक। तो ये पार्ट नंबर 1 फिनिश है। आपको ब्लाइंडली ये टेबल फॉलो नहीं करना है, लेकिन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन है तो इतना याद रखिए, सपोज स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है तो आपको x बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, y बार डायरेक्टली मिलेगा या नहीं भी हो सकता है। ठीक है? सपोज मेरा लाइन और मेरा ऑब्जेक्ट x डायरेक्शन में, तो आपको x बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेंथ का हाफ प्लस रिमेनिंग डिस्टेंस इफ इट इज रिक्वायर्ड। y बार आपको डायरेक्टली मिलेगा फ्रॉम सेंटर टू रेफरेंस एक्सिस डायरेक्टली डिस्टेंस। ठीक है? बट इफ योर element is parallel to y direction, you have to calculate y bar. You have to calculate y bar, but you will get x distance directly, or you may not able to find out x distance. ठीक है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए हम पार्ट नंबर 2 लाइन, इंक्लाइन लाइन का कंसेप्ट समझ लेते हैं। अभी इंक्लाइन लाइन का कंसेप्ट समझते हैं। ये मैं पूरा रिमूव कर रहा हूँ। चलिए, इफ आई एम कंसीडरिंग इंक्लाइन लाइन वाला कंसेप्ट, इंक्लाइन लाइन में क्या लिखा है देखिए। सपोज योर लाइन इज इंक्लाइंड एट सम एंगल, यू हैव ए इंक्लिनेशन सपोज 45 डिग्री है, so not cos and sin component depend on which axis have angle for considering an x bar and y bar. Now we have lots many time discussed your angle with x axis. If you have angle with x axis, your x component will be cos, y component will be sin. Yes or no? And if you have angle with y axis, your x component will sin and y component will be cos. सेम कंसेप्ट यहाँ पे कंसीडर करना है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे कंसीडर करना है। कैसे कंसीडर करना है? चलिए, ये सपोज ये आपका इंक्लाइंड लाइन है। नाउ इट इज अ लाइन एलिमेंट, तो उसका सेंटर उसके सेंटर में ही आएगा, क्लियरली विजिबल है। लेकिन वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना। तो ये तो हमारा स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और आपका लाइन कैसा है? इंक्लाइंड है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल, ये लाइन इंक्लाइंड है तो उसका देख, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है लाइन कौन से एक्सिस पे एंगल बना रहा है। ठीक है? फॉर विच एलिमेंट लाइन विल, फॉर विच एक्सिस योर लाइन विल मेक अ एंगल। In this case, your line having an angle with the x-axis. That's the reason. Now, आपका actually centroid कितना है? L/2 ही है। ठीक है? तो आपका x कोऑर्डिनेट कितना होगा इस केस में? L/2 cos थीटा। Is it clear? And y component कितना होगा? L/2 sin थीटा। Is it clear or not? Suppose आपका लाइन ऐसा है, सोच लो ऐसे लाइन दिया हुआ है एंगल थीटा, लेंथ L है। इन केस में आपका x बार और y बार कैसे आएगा? x बार इक्वल्स टू L/2 sin थीटा एंड y बार इक्वल्स टू L/2 cos थीटा।
इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज कंफर्म स्टूडेंट्स। आपको ये टेबल ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आपका एंगल एक्स एक्सिस पे है तो एक्स बार कितना आएगा? L/2 cos थीटा। आपका एंगल वाई एक्सिस पे है तो आपका एक्स बार कितना आएगा? L/2 sin थीटा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? इज देयर एनी क्वेश्चन? प्लीज कंफर्म मी चेक बॉक्स। तो आई थिंक ये लाइन सी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल एग्जांपल में ठीक है। चलिए सो आ नोट डाउन થઈ ગયું છે કે બાકી છે? આ નોટ ડાઉન થઈ ગયું છે કે બાકી છે? આ બધું નહીં લખો ચાલશે, ખાલી લાઈન સ્ટ્રેટ ડ્રો કરી દો। આ નોટ્સ તમને હું આપી દઈશ, ડોન્ટ વરી। પણ ન્યુમેરિકલ એક્ઝામ્પલમાં મારે સ્લાઇડ વારે ઘડી ઉપર નીચે ના કરવી પડે એના માટે ખાલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇક્વેશન્સ લખી દો। સ્ટ્રેટ લાઈન હોય તો L/2 આવે, ઇન્ક્લાઇન લાઈન હોય તો L/2 cos θ L/2 sin θ આવે, બ્રેકેટમાં લખી રાખો डिपेंड्स ऑन एंगल। ठीक है चलिए again we are going to consider 1D element now। These all are equation for 1D element, keep in mind, not for 2D। now we have a geometrical shape like circle। suppose we have an electrical wire। now if I am consider this electrical wire in case of the circular element, can I consider like that? yes or no? मैं वो वायर को सर्कुलर ज्योमेट्री में कंसीडर कर सकता हूँ, सर्कल बना सकता हूँ उसका। मैं वायर की बात कर रहा हूँ, प्लीज कंफर्म इन चेक बॉक्स। okay so now first of all we need to consider length। now what is the length? now what is the length of circle? can anyone tell me? equation join na I want some clue behind this equation। equation join ko to mana clue of jo why this equation I have used। what is the length of circular element? what is the length of circular element? all of you know, please tell me। what is the length of circular element? सर्कल का लेंथ मेरे को निकलना तो मैं कैसे निकलूंगा? चलिए आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो, whether you are diploma student or degree student, that doesn't mean। yes रेडियस 2π तो लख्यू है मैं, पर व्हाट इज दिस? उसका मीनिंग क्या है? 2πr तो मैंने लिख दिया है, मैं πd भी लिख सकता हूँ, लेकिन उसका मीनिंग क्या है? मेरे को मीनिंग चाहिए। यस पेरीमीटर ऐसा वर्ड कुछ सुना हुआ है? पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सो व्हाट इज इट? 2πr। if you are able to calculate 2πr, you are able to calculate length। so in data either a diameter or radius will be given। now if I am considering a circular element, it is a symmetrical about it every axis, yes or no? so it's x bar and y bars। for an example this, the dark line is your center of gravity of circle, and black dotted line, that is your reference axis। black dotted line, that is your reference axis। so this distance will become your center of x-axis, this distance will become center of y-axis, yes or no? that is nothing but radius। clear है? easy है? easy है? please confirm me। students, only 2 or 3 people give me answer। tell me if you are not interested to attend lecture, I am stop the lecture, I am continuing regular lectures। if you are not interested, tell me, I am stop the lecture। मेरे लिए मैं एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं ले रहा, ठीक है। so I hope all of you are clear why center of gravity either in x direction or y direction, that is the radius of circle। similarly now this is a very important concept, this is a very important concept।
semicircular arc. Semicircular arc. Observe here. Given semicircular arc, first tell me this semicircular arc is symmetrical about which axis? Observe the sketch and give me answer. नीचे मैंने लिखा वो बोल के आंसर मत देना. मैंने जो स्केच ड्रॉ किया है वो देख के मेरे को आंसर दीजिए. ये सेमी सर्कुलर आर्क कौन से एक्सिस पे के लिए सिमेट्रिकल है? फॉर एन एग्जांपल आई एम कंसीडरिंग द सर्कल. यहाँ पे पहले कंसीडर कीजिए. सपोज ये सर्कल है. सपोज ये सर्कल है. मैं ये सर्कल को ये सर्कल के लिए मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ. यहाँ पे देखिए this is your reference center of gravity x, this is your center of gravity y. Now tell me if I am considering this portion of shade करू છું એટલો portion remove કરું છું. Shaded portion I am removing, so I will get like this. Yes or no? I will get like this. Yes or no? Everybody with me? कितना मिलेगा मेरे को? नीचे का पोर्शन मैंने रिमूव किया. ठीक है ना? So now just visualize that on where is the center of this particular semicircle? Where is the center of this particular semicircle? Now for x direction it will remain same. It will remain same. यहाँ पे ही रहेगा. यहाँ पे ही रहेगा. Yes or no? ये लाइन पे यहाँ पे ही रहेगा. बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन y डायरेक्शन, पहले तो सेंटर में ही था लेकिन अभी तो आपका हाफ पोर्शन हो चुका है, रेडियस इतना हो चुका है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पोर्शन विल बी समवट लाइक एट दिस डिस्टेंस. यहाँ पे रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं. दिस इज योर एक्चुअल सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमीसर्कल. एवरीबॉडी विथ मी? दिस इज योर y बार. यस और नो? पहले क्या किया था सर्कल के केस में? ये आपका सेंट्रोइड एक्स एक्सिस था सर्कल का, ये आपका सेंट्रोइड वाई एक्सिस था सर्कल का. मैंने यहां से ये पूरा पोर्शन कट कर दिया, रिमूव किया है. मैंने ऊपर वाला पोर्शन ही कंसीडर किया. जस्ट थिंक योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन एक्स एक्सिस विल रिमेन सेम जगह पे ही रहेगा, बट ऑन वाई एक्सिस it will be changed now. Yes or no? It will be changed now because it is not a symmetrical one. It is not a case of symmetrical one. Yes or no? So this is your y bar. So now keep in mind, if your semicircle is symmetrical about y axis, it is clearly seen that if you fold this object about y axis, you will get exact mirror image. So in that case, keep in mind, suppose मेरा ये reference x axis है. Now don't mix up reference axis and center of gravity axis. Reference axis is the axis about which we are going to calculate centroid. Okay, reference axis is the axis about which we are going to calculate centroid. Suppose ये आपका center of gravity है, sorry, suppose ये dotted line है, मरून कलर से ड्रॉ किया है, वो आपका reference axis है. So from centroid ये आपका x distance होगा. ये आपको डायरेक्टली मिलेगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. रेडियस जितना ही होगा. एवरीबॉडी विथ मी? यस और नो? एवरीबॉडी विथ मी? यस और नो? ओके, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स. ओके, सो बट ये केस में आपको y बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, डायरेक्टली रेडियस इतना नहीं है. तो उसका इक्वेशन आपको याद रखना. इफ यू आर कंसीडरिंग द 1D एलिमेंट, वन डायमेंशन, आपका y बार कितना होगा? 2r डिवाइडेड बाय पाई. ठीक है, r इज योर रेडियस. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर?
Now observe your your semicircle is symmetrical about y-axis, yes or no? Your semicircle is symmetrical about y-axis. So in that case you needed you will require to center of gravity in y direction only. X direction में आपको directly मिलेगा, इतना याद रख सकते हो. We have a equation for only y direction. ये r तो कोई इक्वेशन नहीं. r is not equation, it is a simple terminology, it is a radius. ठीक है, वो directly आपको मिल रहा है. So you need to calculate in x direction. Now if your semicircle which is symmetrical to x-axis, can I say that this semicircle is symmetrical to x-axis? Yes or no? Just think reverse. सोचिए. Say this is your center of the circle. Now if I have cut this circle, I am cutting the shaded area of circle, I will get this much portion. इतना पोर्शन मेरे को मिलेगा जो यहाँ पे मैं शेड कर रहा हूँ. Yes or no? I will get this much portion जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. Now think this semicircle is, this portion will be symmetrical about x-axis, yes or no? This semicircle is symmetrical about x-axis, yes or no? Okay. So in that case, just remember, again this semicircle is symmetrical about x-axis, so you need to calculate x bar, that is your 2r by pi, and y bar directly. Suppose y ऐसा क्यों किया है वो भी यहाँ पे समझ लीजिए. Suppose this is your reference y-axis, ठीक है, and this is your reference x-axis. ये आपका रेफरेंस एक्सिस है अभी जो मैंने ड्रॉ किया है. तो नाउ एज वी हैव डिस्कस, this is your center of your geometry. This distance is your x bar. You have to calculate by this equation 2r by pi, and this distance is nothing but radius. Yes or no? Yes or no? You can mention capital R or small r, doesn't matter. Is it clear or not? Please confirm. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ये टेबल में पता चल गया तो चैप्टर खत्म हो जाएगा. टेबल समझવાનું बोरिंग लागશે પણ ટેબલ ખબર પડી જશે તો ચેપ્ટર પૂરું થયું. Is it clear or not? Any question here? ठीक है, चलिए, fantastic. Now if I am consider क्वार्टर सर्कल R, क्वार्टर यानी कि सर्कल का भी, सर्कल का फोर्थ पार्ट, यस और नो? सपोज ये आपका सर्कल है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इसका मैं फोर्थ पार्ट कंसीडर करता हूं तो मेरे को ऐसा कुछ दिखेगा. नाउ दिस पोर्शन इज नाइदर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस नॉर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, यस और नो? ये पोर्शन आपका एक्स के लिए भी सिमेट्रिकल नहीं है, वाई के लिए भी सिमेट्रिकल नहीं है. तो ये केस में आपको एक्स बार भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, वाई बार भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो आएगा 2r by pi, 2r by pi. ये इक्वेशंस कैसे डिराइव हो रहा है वो नेक्स्ट वीक में हम और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये कैसे डिराइव हो रहा है हम डेरिवेशन का स्पेशल लेक्चर रखेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे. इज इट क्लियर? डोंट वरी, आई विल गिव अ क्लू व्हाई दिस डिस्टेंस इज 2r by pi. डोंट. ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक कोई क्वेश्चन है? ठीक है, चलिए. नाउ वन लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस. हमने ऐसा डिस्कस किया, सर्कल का लेंथ कितना किया? 2 pi r. Now if I am considering semicircle, so what is the length of semicircle? सर्कल का हाफ होगा, yes or no? That is equals to pi r. Everybody with me? And what is for quarter circle? सर्कल का फोर्थ पार्ट होगा 2 pi r का भी चौथा पार्ट, यानी कि pi r by 2. I of length of circle, semicircle and quarter circles are clear. Is it clear, students? Please confirm me. ठीक है ना? Same way
I am cover all the formula at a time. If I am considering the 2D element, first shape a rectangle. 2D element का इक्वेशन कौन सा था? 2D एलिमेंट का इक्वेशन कौन सा था? x बार इक्वल टू समेशन ai xi डिवाइड बाय समेशन ai. सिमिलरली y बार के लिए यस और नो ऐसा कुछ इक्वेशन था? यस और नो? ऐसा कुछ इक्वेशन था? So in that case we need to calculate sorry we need to calculate area. So what is the area of rectangle? Length into width. Yes or no? What is your area? Length into width. Yes or no? Is it clear? ये clear है? Now we are interested to calculate x bar and y bar. X bar and y bar. Suppose this is your rectangle. Everybody know that center of rectangle is at center of the width and center of the length. Yes or no? Yes or no? Suppose this is a center of gravity of rectangle in x direction, and this is a center of gravity of rectangle in y direction. Yes or no? Everybody with me? This is length L, this is width B. Now, if I am consider reference axis, suppose this is your reference axis. This is reference y and this is reference x. Now tell me what is your x bar. Now tell me what is your y bar. Why 0 ducks? Why 0? This is your center. Center से यहाँ तक का distance अवेलेबल है ना? Center के यहाँ तक का distance अवेलेबल है ना? My black line is your reference line. आपको center of gravity reference line से consider करना है. कितना आएगा x के लिए? L/2 बोल सकता हूँ. Yes or no? Y bar B/2. Yes or no? Any question? Any question? Is there any question? Fine. But same case है, दूसरा सिनारियो है. This is your center of gravity of rectangle, x and y axis, length L है, width B है. But listen to me very carefully. This is your reference x-axis. This is your reference x-axis, and this is your reference y-axis. Now tell me what is your x bar and y bar. ये मैंने जो डार्क लाइन ड्रॉ किया है वो आपका रेफरेंस एक्सिस है. आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम लोकेशन पे है. नाउ टेल मी व्हाट इज योर एक्स बार एंड वाई बार. व्हाट वी विल डू इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ज्योमेट्री के सेंटर से हम रेफरेंस एक्सिस पे जा रहे हैं. देव प्लीज थिंक एंड गिव मी आंसर. डोंट गिव मी आंसर फास्ट, गिव मी आंसर स्लो. धवल प्लीज थिंक एंड गिव मी आंसर. ज्योमेट्री के सेंटर से हम रेफरेंस एक्स और रेफरेंस वाई तक जा रहे हैं. आपका ये एक्सिस, दोनों एक्सिस आपका रेफरेंस एक्सिस है, और ये आपका रेक्टेंगल का सेंटर है. तो ये रेक्टेंगल के सेंटर से मेरे को रेफरेंस वाई तक जाना पड़ेगा पहले. यस और नो? टू गेट एक्स. Please confirm me. I want answer from all the students. So now tell me what is your x. Now tell me what is your x. What is your x? Yes, L/2. But
रेक्टेंगल के सेंटर से मेरे को रेफरेंस एक्स पे जाना है. इफ यू आर एबल टू फाइंड डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन, आर यू एबल टू फाइंड डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन? टेल मी. Are you able to distance in y direction? Tell me. Y डायरेक्शन में आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाओगे? सॉलिड लाइन आपको कंसीडर करना है. गुड डॉक्स. y b by 2 double. Please rethink. This is your reference x axis. What is your concept of center of gravity? सेंटर से रेफरेंस y तक जाओगे तो आपको x मिलेगा. सेंटर से रेफरेंस x तक जाओगे तो आपको y मिलेगा. ये सेंटर से मेरे को रेफरेंस x तक जाना है. आपका रेफरेंस एक्सिस और सेंटर एक्सिस कहाँ पे है? सेम लोकेशन पे है कि नहीं? सेंटर पॉइंट ऑफ द ज्योमेट्री एंड रेफरेंस एक्स एक्सिस दोनों सेम ही पॉइंट पे है. तो आपको एक y बार मिलेगा. क्वेश्चन इज दैट. Are you able to understand? Yes, docs, you are right. Are you able to understand? I am giving a mic rights. Now I am giving a mic rights. If you have a question, you can ask me. Okay, if you have any question, one by one, put. If you have any question, you can ask me. सर एक्स बार में तो खबर पड़ी गई पण आ वाई बार નું ના ખબર પડી. Okay, let me explain again. सेम ज्योमेट्री कंसीडर करू છું. ओके, सेम ज्योमेट्री कंसीडर करू છું. I am removing everything. This is your rectangle. ठीक है, लेंथ and width. Now, at which location is center of gravity of rectangle? Center of the rectangle. Yes or no? Yes or no? Rectangle center na center માં જાવશે. Yes or no? And axis passing through this rectangle, that is called center of gravity of geometry. Geometry ની center of gravity થશે. આટલું ક્લિયર છે? आटलो क्लियर है? प्लीज कंफर्म मी. फाइन, चलिए. ये आपका अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक्सिस, वो आपका रेफरेंस एक्सिस है. दिस इज योर रेफरेंस वाई एक्सिस, डार्क शेडेड लाइन. दिस इज योर रेफरेंस एक्स एक्सिस. नाउ व्हाट इज द कांसेप्ट? वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन सेंटर ऑफ सिस्टम. सिस्टम का सेंटर कहाँ पे है? मैं कौन सा सिस्टम कंसीडर कर रहा हूँ? रेक्टेंगल कंसीडर कर रहा हूँ. ये सिस्टम का सेंटर है. यस और नो? यहां से मेरे को रेफरेंस एक्सिस पर तक जाना पड़ेगा. सो ये डिस्टेंस मेरा x होगा. नाउ फॉर दिस केस, कैन आई एबल टू कैलकुलेट y with respect to reference axis? Tell me, can I able to calculate y with respect to reference axis? Please tell me. तो समझ आ गया सर. y इसलिए 0 हो गया. आप समझ पता चला ना क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, पता चल. ठीक है, चलिए. So I hope it is clear to all of you. In this case, I am not able to calculate y distance. That's the reason y bar equal to or y equal to 0 and x equals to L by 2. Now this concept will remain for x bar also. Don't रट्टा मत मार देना. ठीक है, ब्लाइंडली ये इक्वेशन को फॉलो मत करना. कंसेप्ट फॉलो करना सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है. So I hope it is clear to all of you. Now next is a triangle. Same way, triangle का तो हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी. एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 b into d. नाउ कीप इन माइंड, सपोज आपके पास ऐसा ट्राइंगल है. इसको मैंने एपेक्स किया था. यस और नो? इसको मैं एपेक्स बोल सकता हूँ. यस और नो? प्लीज कंफर्म मी. इसको मैं बेस बोल सकता हूँ. इसको भी मैं बेस बोल सकता हूँ. Everybody with me? चलिए. Suppose depending on your reference axis, your distance will be changed.
सपोज आई एम कैलकुलेटिंग डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन, मैं पहले डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहा हूँ. सपोज आपका डिस्टेंस बेस से है, तो ये डिस्टेंस होगा, सपोज ये है आपका बी और ये है आपका डी, तो ये होगा बेस से 1/3 इंटू बी. ठीक है, और एपेक्स से कितना होगा 2/3 इंटू बी. इज इट क्लियर? ऐसा हमने सपोर्ट रिएक्शन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. ठीक है ना? Is it clear or not? Please confirm me. Fine. Similarly, suppose we are discussing in y direction. Again, we have two scenario. It may be your distance from base, or it may be your distance from apex. Same procedure. Apex से 2/3 d आएगा, base से 1/3 d आएगा. Now, what we will do in example? Suppose example में ऐसा triangle दिया है और आपका reference axis यहाँ पे है. ये दोनों एक्सिस आपका रेफरेंस है, तो आपका एक्स बार कितना आएगा 2/3 आएगा, 2/3 भी. वाई बार कितना आएगा 1/3 डी. पता चला कैसे अप्लाई करना है. सपोज एग्जाम में ऐसा ट्राइंगल दिया है, ये दोनों आपके रेफरेंस वाई और रेफरेंस एक्स एक्सिस है. सेंटर से हम देख रहे हैं तो ट्राइंगल का कौन सा पोर्शन देख रहा है एक्स पे, एपेक्स. दैट्स द रीजन 2/3 बी कंसीडर करेंगे. y x डायरेक्शन में कौन सा शेप दिख रहा है, बेस. दैट्स 1/3 d कंसीडर. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्लियर है? क्लियर है? प्लीज कंफर्म मी. ठीक है, चलिए. एनी क्वेश्चन टिल? डोंट वरी, it is not possible to complete chapter in a 1-2 hours lecture. Okay, so we are discussing only useful formulas. We are discuss numerical problem in next week. ठीक है, आपको कंटिन्यू रखना तो मैं कंटिन्यू करूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इफ यू आर वांट टू कंटिन्यू सेम लेक्चर इन नेक्स्ट सैटरडे, आई डोंट. ठीक है, चलिए. यूजफुल फॉर्मूला फॉर सर्कल. सर्कल के लिए सर्कल का एरिया π/4 स्क्वायर और πr स्क्वायर होगा. नाउ एज वी हैव डिस्कस फॉर 1D एलिमेंट्स, सर्कल का सेंटर यहाँ पे आएगा. ये रेड लाइन आपका रेफरेंस एक्सिस है, तो उसमें आपका एक्स बार वाई बार कितना आएगा, रेडियस इतना आएगा. पता चला प्लीज कंफर्म मी. बट इफ आई एम कंसीडर डिफरेंट सिनेरियो, मैं दूसरा सिनेरियो कंसीडर कर रहा हूँ. ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल है, सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ सर्कल है. नाउ इफ आई एम कंसीडरिंग लाइक दिस, ये आपका रेफरेंस एक्स एक्सिस है और ये आपका रेफरेंस वाई एक्सिस है. इन दैट केस व्हाट इज योर एक्स बार एंड वाई बार? In that case, what is your x bar and y bar? Tell me. चलिए. Yes, good, Tony. You are right. थोड़ा सोच के आंसर दीजिए मेरे को. सर्कल का जो सेंटर एक्सिस है वहीं पे ही हमारा रेफरेंस एक्सिस है. उस केस में हमारा एक्स बार वाई बार कितना होगा? टेल मी. यू आर राइट, धवल. जीरो ही होगा. ठीक है, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिस्टम और center of gravity of reference axis will be located at same location. You are not able to calculate x and y. Now second case ले रहे हैं. Suppose this is your reference y axis and this is your reference x axis. Now tell me what is your x bar and y bar? सेंटर तो यहाँ पे ही रहेगा. Tell me what is your x bar and what is your y bar? Docs, please rethink and give me answer.
कवल सोच के बताइए। ये मेरा एक्स बार है, यस राइट। एक्स बार इक्वल टू रेडियस होगा, लेकिन वाई बार 0। यू आर एबल टू कैलकुलेट वाई, यू आर एबल टू कैलकुलेट वाई? नो, आपको ये सोचना पड़ेगा। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? चलिए, similarly semicircular arc, same concept as one dimension, don't mix up 1D and 2D distance. સેમિસર્ક્યુલર આર્ક એરિયા માટે છે, 2D માટે છે, તો એનો એરિયા સર્કલ નો હાફ થશે એટલે પાઈ આર સ્ક્વેર બાય 2 કહી શકાય. નાઉ same concept, it is a symmetrical about y axis, yes or no? As we have discussed, if it is symmetrical about y axis, either your x bar will be radius or 0, yes or no? તમારું x bar ડાયરેક્ટ મળતું તો એ કેસમાં yes or no? Just compare with 1D element, you need to calculate y bar, that is nothing but 4r by 3 pi for 2D. 1D માં કેટલો હતું? 2r by pi, yes or no? 1D માં 2r by pi હતું અને 2D માં હશે 4r by 3. Is it clear or not? Check it for 1D. If I am not wrong, 2r by pi, 2r by pi, and for 2D it will become 4r by 3 pi. Is it clear or not? Please confirm me. Concept same है, 1D consider कर रहे हो, 2D consider कर रहे हो, concept same है, कब y bar लेना है, कब x bar लेना है. Same way, if your semicircular arc is symmetrical about y axis, again area, sorry यहाँ पे just a minute, यहाँ पे एरिया आएगा, लेंथ नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पे एरिया आएगा, area equals to pi r square by 2 and x bar equals to 4r by 3 pi because it is a symmetrical about x axis. As we have discussed, if your geometry is symmetrical about x axis, you need to calculate center of gravity in x axis. Y that will be either radius or 0. Is it clear or not? Please confirm me. Please confirm me. Okay, similarly, if you are considering the quarter circular arc, don't wire here arc, यहाँ पे arc आएगा, ठीक है? If you are going to consider quarter circular arc, your area is the fourth of the circle, pi r square divided by 4, and in that case your geometry neither symmetrical about x axis or y axis. That's the reason x equal to 4r by pi 3 pi and y equal to 4r by 3 pi. Is it clear? Is it clear? Please confirm me. क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन है? चलिए, कोई बात नहीं. Now take a snapshot of these particular slides. Just a minute, I am mentioning here 1D क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है. This is for 1D element. लाइन, उसको हम लाइन एलिमेंट भी बोल सकते हैं, वायर एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है? Let me go just snapshot. Tell me. snapshot લઈ લીધો છે? Please tell me. Yes sir. चलो, this next slide again 1D line જ છે. Take a snapshot of this slide also. Take a snapshot of this slide also. Again, it is a 1D. Keep in mind. I go, please tell me. Yes sir. Now, just wait a minute. This is for 2D. Okay, this is for 2D. Just a minute, I am mentioning here 2D or area element. You can say also say area, 2-dimensional or area. Second slide. Third slide. Just a minute. This is the
quarter circle arc. This is the area. Is it clear or not? Please confirm. Is it clear? અહીંયા સુધી કોઈ ક્વેશ્ચન છે? Is it clear now? Chal. Yes, sir. Okay. So we will discuss this example in next week. ठीक है? ये example हम next week में discuss करेंगे. So I am stopping lecture. Just a minute. I am taking your attendance. Just a minute. Okay. In regular as well as T2D, we are starting this topic next week. Okay, I think regular માં આપણે વેગનો સિરમ પૂરો થઈ ગયો છે. સોરી, ઓફલાઈન ઓનલાઈન ની વાત કરી રહ્યા છીએ. ઓફલાઈનમાં વેગનો સિરમ પૂરો થઈ ગયો છે. આપણે સેન્ટર ઓફ ગ્રેવિટી અહીંયાથી કન્ટિન્યુ કરીશું અને ઓનલાઈનમાં આપણે સપોર્ટ રિએક્શન એસએબીએમ પૂરું થઈ ગયું છે. ઓકે, સો વી વિલ કન્ટિન્યુ ધીસ ટોપિક. If it is required, we will take a extra lecture on next Saturday. I think it is for only online students. Online student માટે જશે. If any offline student want to sit in that lecture, I don't mind. आप बेच सकते हो. उसमें हम वेरिग्नोस थ्योरम और ट्रस वाला पोर्शन करेंगे. Is it clear? Because it is not possible to get a speed up in an online lecture as to offline lecture. So online वाला बच्चों पे तो extra lecture attend करने पड़ेगा. ठीक है? If any offline वाला स्टूडेंट एक्स्ट्रा लेक्चर में बैठना चाहता है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है? So I am wind up today's lecture.